confronted floods of biblical proportions, which were the most dreadful manifestation of a climate-induced disaster. Over 33 million people were affected across Pakistan, with loss of life, huge damage to livelihoods, and critical infrastructure badly damaged. Flash floods continue to wreak heartbreaking devastation in Pakistan. Just last week, several lives were tragically lost in the affected districts of Pakistan. For my country and many others which have suffered similar catastrophic losses, a crisis of accelerated vulnerability now defines our existence. Excellencies, Pakistan on its part has undertaken a series of climate-related policy initiatives and is aggressively pursuing a 4F plan focusing on resilience, recovery, rehabilitation, and reconstruction. The success of this model offers valuable lessons to all of us. Ladies and gentlemen, in this regard, Pakistan proposes the development of low-emission corridors, an ECO-wide carbon market platform, and regional disaster resilience systems, a dedicated framework to mobilize climate finance along with regional clean energy corridors and ecotourism initiatives can further drive inclusive, sustainable growth, creating green jobs, especially for youth and women, and supporting livelihoods in vulnerable regions. My dear brothers and sisters, forces of instability and chaos continue to destabilize our region for their own geopolitical agendas. The unlawful, unjustified, and uncalled for Israeli attack on Iran, a brotherly country and fellow ECO member state, were the most recent manifestation of this dangerous trend. Pakistan strongly condemns this act of Israeli aggression against Iran, and I offer my deepest condolences and very strong condemnation of this aggression, those martyrs who were killed by Israeli aggression. May Allah grant them place in Jannah, and we pray for the speedy recovery of injured brothers and sisters in Iran. Ladies and gentlemen, the unprovoked and reckless Indian hostility directed towards Pakistan after an unfortunate incident in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir was yet another attempt to destabilize regional peace. The world witnessed the steadfast resolve of our valiant armed forces under the able leadership of the Field Marshal Syed Asim Munir and the unyielding spirit of our resilient people who stood firm in the face of provocation and responded with exemplary courage and professionalism. I take this opportunity to appreciate the support and solidarity extended to Pakistan by the brotherly ECO member states in the aftermath of India's aggression earlier this year. Excellencies, unfortunately, the world has been witnessing an unprecedented man-made catastrophe in Gaza, a region that has descended into an abyss of perpetual suffering.
It is as if humanity no longer exists while famine looms large. Humanitarian workers, including UN personnel, are being attacked by Israel with impunity to deliberately cut off the only lifeline of the helpless and starving people of Gaza. Ladies and gentlemen, Pakistan stands firmly against those who perpetrate barbaric acts against innocent people anywhere in the world, whether in Gaza or Indian illegally occupied Jammu and Kashmir or Iran. Distinguished delegates, while the threat of natural climate-induced changes remains formidable, we are now witnessing a new and alarming trend with India's weaponization of water. India's illegal attempt to defy the World Bank negotiated Indus Water Treaty, as well as its blatant disregard for the recent ruling of the Permanent Court of Arbitration, are completely unacceptable and we reject it with contempt. Waters of the Indus are the lifeline for Pakistan's 240 million people. Under no circumstances can India be permitted to pursue this dangerous path that will amount to an act of aggression against the people of Pakistan. Honorable heads of delegation, promotion of trade and investment holds the key to securing our common goals for strengthening regional connectivity, commencement of major ECO transport corridors, and as it was said here earlier on, that ECO was previously RCD, a regional cooperation development between Turkey, Iran, and Pakistan. And this treaty was signed back in 60s, I believe. ECO transport corridors, ensuring energy security, promoting intra-regional tourism and economic growth and productivity. These elements were envisaged and agreed upon as the ECO Vision 2025 during the 13th ECO Summit at Islamabad in March 2017. In this regard, the ECO Trade Agreement was visualized as a landmark intra-regional trade agreement. However, despite the passage of a considerable period, it is yet to be implemented. Excellencies, heirs to the proud legacy of the ancient and well-established Silk Route, which nurtured rich and industrious civilizations, the great ECO region must build on this historic synergy to shape a better future. I thank all member states for their support in designating Lahore a confluence of history, culture, and cuisine as the ECO tourism capital for the year 2027. I assure you that Lahore, Pakistan's cultural heart, will enthrall all those who will visit us, and I extend a very warm invitation to you all. I also congratulate Turkmenistan and Kyrgyzstan on the selection of Mary and Korakol as ECO tourism capitals for the year 2028 and 2029, respectively. Ladies and gentlemen, to conclude, as members of the ECO family, sharing strong commonalities of history and geography, of faith and culture, we have a firm basis for a lasting cooperative relationship. We are endowed with rich resources and, most importantly, the expectation of our 566 million
hard-working and talented people to visualize ECO as a credible vehicle of regional integration. In this regard, Pakistan supports Uzbekistan's proposal for strategic objectives of cooperation 2035 as a step in the right direction. Let us resolve to enhance our solidarity and cooperation, accept the global challenges, and channel our collective energies towards a future that guarantees our people's a life of peace, progress, and prosperity. I thank you all. आज़रबाईजान में इक्तिसादी ताउन तंजीम का 17वां इजलास वज़ीर-ए-आज़म खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा आलमी मंजरनामे में टेक्नोलॉजिकल तब्दीलियां तेजी से रूनुमा हो रही हैं, बढ़ते हुए बाहमी इन्हिसार और इल्मी वुसअत का नया दौर शुरू हो रहा है। तरक्की के अमल में रुकन ममालिक के साथ इज्तिमाई काविशों में शरीक होने पर फख्र है। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए पॉलिसी वज़ा की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए तजावीज़ भी पेश की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान पर इसराइली हमले की पाकिस्तान की जानिब शदीद मज़म्मत की। इसराइली हमले में शहीद होने वालों की मग़फ़िरत और ज़ख्मियों की सेहतियाबी के लिए दुआ भी की। कराची के इलाके लियारी बगदादी में 6 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई, 7 अफराद दबकर जाँ बहक, 4 खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मलबे में दबे दीगर अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस का कहना है 30 से जायद अफराद के मलबे में दबे होने की इतलात हैं। रेस्क्यू की टीमें मशीनरी के साथ इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। खस्ताहाल इमारत गिरने के बायस अतराफ की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। दीवारों में दरारें पड़ गईं, इमारत को खाली करा लिया गया है। रजाकारों का कहना है तंग गलियों और लोगों के रश के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। लियारी में मुतासा इमारत के बाहर एक भाई छोटी बहन और 3 माह की भांजी को बचाने की फरियाद करता रहा। एक शख्स ने कहा लोग मलबे में दबे थे, रेस्क्यू के लिए फोन करते रहे, गाड़ियां ताखिर से आईं। मुतासा खातून इंकशाफ किया इमारत कई दिनों से हिल रही थी, सबको पता था लेकिन किसी ने फ्लैट नहीं छोड़ा। कितने दिन से हिल रही थी बिल्डिंग, सबको बता रहे थे, सब लोग नीचे नहीं उतर रहे थे, हम लोग की सांस भी नहीं रही, अपनी मर गए हमारी सांस। 10:19 में फोन किया, रेस्क्यू की गाड़ी आई है 11:30 बजे। 3 को हमने जिंदा निकाला है, 2 हमारे सामने तड़प तड़प के मर गए। अपनी आप मदद जितना निकाल सकते थे निकाला, गाड़ी लेट आई। छोटी बहन है, उसकी फैमिली, उसकी 3 महीने की बेबी है, वो अभी तक नहीं, मैंने पूरी फैमिली के साथ अपने अंदर है। खुदा रहा उनको निकाला जाए, उनको बचाया जाए। हमारे पूरा खानदान है, मेरे पप्पी के घर की पूरी फैमिली, आने ही नहीं दे रहे, हमें देखने ही नहीं दे रहे। हमारे बंदे कहाँ है कहाँ नहीं है, देखने ही नहीं दे रहे, देखने नहीं दे रहे। अंदर कोई छोड़े देखे कहाँ है, कोई है नहीं है। 2 जने मिले, 4 जने अंदर फंसे हुए हैं। जब पता था मकान मालिक को कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है तो खाली करवा देता। ये पहली बिल्डिंग नहीं है, चाकीवाड़ा 2 नंबर में एक बिल्डिंग गिरी। बिल्डर माफिया है, ये 60-60 गज के ऊपर 8-8 मंजिला बिल्डिंग बनाते हैं। इनके लिए इंसानी जानों का कोई वो नहीं है, वो सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। कराची के इलाके लियारी बगदादी में इमारत गिरने से दर्जनों अफराद जख्मी हुए। जख्मियों के अहले खाना सिविल अस्पताल के बाहर शदीद परेशान हैं। इस वक्त हमारी नुमाइंदा इशरत खान वहां मौजूद हैं, मजीद तफसील उनसे जानते हैं। जी इशरत, अपडेट कीजिए। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त मैं ट्रामा सेंटर सिविल में मौजूद हूँ, जहाँ आज सुबह लियारी में गिरने वाली रिहायशी इमारत के जो लोग यहाँ लाए गए हैं जख्मी और जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके कुछ लवाहिकीन यहाँ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मेरे भाई के 4 बच्चे हैं, वो 4 बच्चे तो नीचे खेल रहे थे, वो बच गए। बाकी एक जवान लड़का है 16-17 साल का, वो है, और मेरी चाची है और मेरा चाचा है। 4 इस वक्त हॉस्पिटल में कितने हैं? इस वक्त हॉस्पिटल में 2 अफराद हैं। और जो इमारत के मलबे के नीचे हैं? हाँ, बाकी वो अभी तक पता नहीं चला है लोग। मेरी खाला है सगी, और इनके तकरीबन बाकी 2 अफराद बाहर आ चुके हैं बाहर। इनका शौहर है और मेरी खाला खुद, और इनका छोटा एक बच्चे का एक बच्चा है, वो भी अभी तक उनका कुछ पता नहीं है। बिल्कुल, आपने यहाँ लोगों की बात सुनी, उनके रिश्तेदार यहाँ मौजूद है, किसी की खाला है, किसी के भाई के बच्चे हैं। रिहायशी इमारत थी जो ज़मीन बोस हो गई है, जिसमें 15 से ज़ायद फैमिलीज रिहाइश पजीर थी और बहुत सारे अफराद इस वक्त भी मलबे तले दबे हुए हैं। कुछ लोग हॉस्पिटल लाए गए हैं।
इशरत खान सिविल अस्पताल के बाहर मौजूद थे, जख्मियों की हालत के बारे में बता रही थी। रुक करेंगे जाए हादसा का, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे आसिफ खान, उनसे ताजा तरीन सूरत हाल जानेंगे। आसिफ बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लियारी के इलाके में मौजूद हैं, बगदादी, जहां पर इमारत गिरने का वाकया रोनुमा हुआ। इस वक्त भी रेस्क्यू का काम है वो जारी है। ये तमाम मलबा इस वक्त भी यहाँ पर पड़ा, उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। 5 अफराद की जो डेड बॉडीज हैं, लाशें हैं, उनको यहाँ से निकाला गया है। 8 जख्मियों को यहाँ से निकाला गया है और इस वक्त भी मुतादिद अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। और ये 5 मंजिला इमारत थी जिसके 6ठे फ्लोर के ऊपर पेंट हाउस बना हुआ था और आज सुबह जो है ये इमारत एक धमाके से मुनद्दिम हो गई। जबकि देखा जाए तो इस इमारत के साथ जो दीगर इमारतें हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। और जो इलाका मकीन है उनका कहना यह है कि इसके साथ ही एक और इमारत है, वो भी जो है इस वक्त मखदूश हालत के अंदर है। मुतादिद फैमिलीज यहाँ पर रिहाइश पजीर थी जिस वक्त ये इमारत यहाँ पर मुनद्दिम हुई और मुतादिद लोग जिसमें खवातीन, बच्चे शामिल हैं, वो इस इमारत के मलबे तले दब गए, जिसमें से 8 जख्मियों को यहाँ से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। 5 अफराद की जो लाशें हैं वो यहाँ से निकाली गई हैं, जिसमें एक खातून भी शामिल है। क्रेन की मदद से, शॉवल की मदद से जो ये मलबा है, ये देखें, इसको यहाँ से हटाया जा रहा है और जो रेस्क्यू का अमला है वो यहाँ पर मौजूद है और रेस्क्यू का काम जो है वो ताहाल जारी है। तर्जुमान 1122 हसानुल हसीब का कहना है कराची में इमारत गिरने की इत्तला ताखीर से मिली। इलाके में मोबाइल फोन सिग्नल बंद थे। 100 से ज्यादा रेस्क्यू एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। वाकया था जो बड़ा लेट रिपोर्ट हुआ, उसकी वजह यह है कि हमें 1122 के कमांड एंड कंट्रोल में ही वो इत्तला लेट मिली ड्यू टू सिग्नल इश्यूज। यहाँ पे बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, वहाँ इर्द गिर्द जो है वो सिग्नल्स को पहले ही बंद कर दिया जाता है मुहर्रम के तनाजुर से। इत्तला मिलते ही हमारी पहली टीम वहाँ विद इन 15 मिनट्स जायबुकू पर पहुंच गई थी। 100 से ज्यादा रेस्क्यूअर वहाँ पे जायबुकू पर मौजूद है। हमारी स्पेशलाइज्ड डिजास्टर रिस्पॉन्स व्हीकल मौजूद है, ऑपरेशन जारी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मुतासा इमारत को खतरनाक करार दिया था। इमारत खाली कराने का नोटिस भी जारी किया था। डीजी एसपीसीए का कहना है लियारी में 50 साल पुरानी इमारत कैसे गिरी, टेक्निकल कमेटी तयन करेगी। पूरे शहर में 578 मखदूश इमारतें हैं। सबसे ज्यादा तादाद जिला जुनूबी में है, जहां 456 इमारतें नाकाबिल रिहाइश हैं। जिला वस्ती दूसरे और जिला किमाड़ी तीसरे नंबर पर है। जिला कुरंगी में मखदूश इमारतों की तादाद 14, शर्की में 13, मलीर में 4 और गरबी में 2 हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लियारी में इमारत गिरने के वाक़े का नोटिस ले लिया। कहते हैं ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। मुत्तल्लिका हुकाम फौरी रिपोर्ट पेश करें। रेस्क्यू टीमें मलबे से मुतासरीन को फौरी निकालने के लिए इक़दामात करें। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। वजीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया लियारी में इमारत गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे से अब तक 6 जख्मी अफराद को निकाला गया है। वजीर आला सिंध ने SBCA से शहरी की खस्ता हाल इमारतों की फौरी तफसीलात मांग ली। कहा खतरनाक इमारतों की फौरी निशानदही और शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दामात करें। गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने इमारत गिरने की तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी। तर्जुमान के मुताबिक कमेटी 3 रोज में जिम्मेदारान अफसरान की निशानदही करके रिपोर्ट वज़ीर बल्दियात को पेश करेगी। राब्ते में था यहाँ जो लोग हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, दीगर अफसरान थे, उनसे यहाँ प्रॉब्लम ये हुई कि आज आपको इल्म है कि थोड़े मोबाइल फ़ोन के जो नेटवर्क है वो भी मुतासिर हैं, तो इसकी वजह से कुछ ताख़ीर हुई। जो मुझे पता चला फौरी तौर पे हम शायद बहुत सारी मशीनरी जो पहुँचनी चाहिए उसको नहीं पहुँचा सके, लेकिन बहरहाल अब वो सारी मोबिलाइज हो गई हैं। 74 की बता रहे हैं कि ये इमारत है। इनको पिछले कोई 4, 5, 6 सालों से नोटिस दिए जा रहे हैं और एक नहीं कई नोटिस इनको दिए गए थे कि ये खाली करें। SBCA के अफसरान हैं, उनकी भी जिम्मेदारियां बनती हैं। इस वाक़े के बाद डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और जो यहाँ पे बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स थे सबको हमने सस्पेंड भी कर दिया है और एक इंक्वायरी कमेटी भी बना दी है ताकि उसकी डिटेल इंक्वायरी भी करें और जिम्मेदारान का तयन करें, असबाब का तयन करें और इस किस्म के वाक़यात को रोकने के लिए अपनी जो तजावीज़ हैं वो भी वो मुरतब करके हमें दें। इल्लीगल कंस्ट्रक्शन का एक अजाब है शहर के ऊपर, जो माफिया है जिन्होंने लोगों की जानों को अजाब में डाला हुआ है, उनके खिलाफ तो हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन इसमें जब तक शहरी हमारा साथ नहीं तो नहीं रोक सकते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबोल कहते हैं इस वक्त तरजीह मलबे तले दबे अफराद को निकालना है। हमारा तमाम फोकस यही है कि जो जेर मलबा तमाम अफराद है उनको सेफली रिकवर किया जाए। रहायशियों को बताया गया था कि ये बिल्डिंग फिट फॉर रेजिडेंस नहीं है, मगर लोग कहते हैं कि हम यहाँ से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। गवर्नमेंट कोशिश भी करती है कि मुतबादिल उनको दे। CM साहब ने खुद नोटिस लेते हुए SBCA को फौरी तौर पर इकदाम दिए कि
रिपोर्ट पब्लिश किया जाए। 80-80 गज के प्लॉट में ओरिजिनली 3 या 4 मंजिला की इजाजत दी गई थी। बिल्डर के साथ मिलकर रिहायशी अक्सर 2, 3, 4 मंजिल ऐड कर लेते हैं। ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग है जो हमने तोड़वाई भी है, रिहायशियों को हमने चालान भी दिए, बिल्डर को भी सजा दी गई है। SBCA का कोई अमला इसमें मुलविस पाया जाता है तो उसको भी सस्पेंड किया गया है। मेरे वालिद साहब MNA है इलाके के, उन्होंने SBCA के सरबराह से कहा था कि आप इन तमाम बिल्डिंग्स को वेकेट कराया जाए। उसके बाद बहुत सारी बिल्डिंग्स के खिलाफ एक्शन लिया भी गया था। मुतबादिल अरेंजमेंट भी करेंगे ताकि इनको रात को खुले आसमान के नीचे नहीं अपने बच्चों के साथ बैठना पड़े। SBCA से भी रिपोर्ट तलब कर ली। सदर मुमलिकत ने कराची में इमारत गिरने के अफसोसनाक साने पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंध हुकूमत को इमदादी सरगर्मियों में तेजी लाने की हिदायत की। सदर मुमलिकत ने मुतासर अफराद को फौरी रेस्क्यू करने और मलबे तले फंसे अफराद को निकालने पर जोर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से जाँ बहक अफराद के अहले खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी की गई। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने जख्मियों की जल्द से एहतियाबी और बहाली की दुआ की। सदर मुमलिकत ने हादसे की वजूहात का फौरी तयन करने की हिदायत की। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए मौसर इकदाम की हिदायत भी की। वज़ीर आज़म ने कराची में रिहायशी इमारत गिरने से होने वाले जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। जाँ बहक होने वालों की बुलंदी दरजात की दुआ और उनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म ने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ और हर मुमकिन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने मलबे में फंसे अफराद को बचाने के हवाले से रेस्क्यू ऑपरेशन तेज तर करने की हिदायत की है। कहा कि आइंदा ऐसे हादसात से बचाव के लिए तरजीही बुनियादों पर हिकमत अमली तरतीब दी जाए। कराची में इमारत गिरने वाला सानिया इंतहाई अफसोसनाक है। बिलावल भुट्टो कहते हैं जाँ बहक अफराद